नगरपालिका चुनाव लड़ रहे शिंदे गुट शिवसेना के प्रभाग क्रमांक 7 के उम्मीदवारों ने शहर के शनि मंदिर से शुक्रवार को प्रभाग प्रचार की दमदार शुरुआत की। इस प्रचार यात्रा में बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। नगर पालिका चुनाव के चलते विभिन्न दलों ने प्रचार यात्राएं शुरू कर दी है। इसके साथ ही विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों का और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने अपने प्रभागों में अपने अपने स्तर पर जमकर प्रचार का आगाज शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रभाग क्रमांक 7 के शिंदे गुट शिवसेना के पालक मंत्री संजय राठौड़ के उम्मीदवारों ने स्थानीय शनि मंदिर से प्रभाग प्रचार यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिवसेना के प्रभाग क्रमांक 7 की उम्मीदवार वैशाली विठोबा दूधे, प्रभाग क्रमांक 7 की उम्मीदवार नीता सुरेंद्र नवरे और प्रभाग क्रमांक 7 के उम्मीदवार सचिन बनगिनवार ने अपने समर्थकों के साथ प्रभाग का दौरा किया। परिसर के शनि मंदिर, नगरेश्वर मंदिर, गणपति मंदिर, राम मंदिर में पूजा अर्चा कर प्रभाग यात्रा का शुभारंभ किया गया। सचिन लक्ष्मणराव बनगिनवार प्रभाग क्रमांक 7 मधून शिवसेना शिंदे गट याच्यावर उभा आहे आणि सगळ्यांना विनंती की सगळ्यांनी भरघोस वोट देऊन आम्हाला मदत करावी ही विनंती। नमस्कार, मी वैशाली विठोबाजी दुधे प्रभाग 7 मधून उभी आहे। शिवसेने शिंदे गटासाठी सर्वांनी मला भरघोस मतांनी निवडून आणावे आणि मदत करावी ही सर्वांना विनंती करते। धनुष्यबाण। मी प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये शिवसेना धनुष्यबाण या चिन्हावर उभी आहे। आमच्या सर्व पॅनलला तुम्ही विजयी करा। संजूभाऊ राठोड यांचा आपला पक्ष आहे, यांचे हात तुम्ही बळकट करा आणि आपल्या सर्व पॅनलला विजयी करा। आपल्याला 4 वोट करायचे आहेत। आपला प्रभाग मोठा आहे आणि यामध्ये अध्यक्ष आहेत कलोसे मॅडम, त्यामध्येच आपले सचिन भाऊ बनगिनवार, वैशालीताई दुधे आणि मी स्वतः नीता सुरेंद्र नवरे। तर आपल्या पॅनलचा सर्वांनी विजयी करा, भरघोस मतांनी आम्हाला विजयी करा। इस दौरान तीनों उम्मीदवारों ने घर घर पहुंचकर परिसर की जनता से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सचिन बनगिनवार सहित अन्य उम्मीदवारों का परिसर की जनता स्वागत करती नजर आई। इस प्रचार यात्रा में बड़ी संख्या में न सिर्फ शिंदे गुट शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, बल्कि शिंदे गुट शिवसेना की ओर से प्रभाग चुनाव लड़ रहे तीनों उम्मीदवारों के समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल थे। सर्वसामान्य जनतेचा जे काही लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाचा सोडवणूक करण्यासाठी नगरपालिकेमध्ये जाण्याची त्यांची तळमळ आहे। त्यांनी वर्षानुवर्षी इथं काम केलेलं आहे। त्या माध्यमातून आपल्या विभागातील जनतेला सगळे विकासात्मक कामं पाहायला भेटतील। संजयभाऊ राठोड साहेबांची साथ त्यांना जर भेटली, त्यांना संजयभाऊ राठोड साहेबांसोबत त्यांना काम करण्याची संधी मिळाली तर खरोखर आपल्या विभागाचा याच्या आधी झाला नसेल इतका प्रचंड प्रमाणात विकास होणार आहे। तेव्हा सर्वसामान्य जनता ही ओळखून आहे की काम करणारे कोण मंडळी आहे। त्यामुळे या 3 आपले उमेदवार जे आहेत त्यांना ताकदीने साथ देतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। तसेच नगराध्यक्ष पदाच्या ज्या उमेदवार आहे शिवसेनेतर्फे लक्ष्मीताई कलोसे पवार ह्या एक अनुभवी व्यक्तिमत्व आहे। त्यांनी नगरपालिका याच्या आधी सदस्यत्व म्हणून त्यांनी अनुभवलेला आहे। त्यांनी प्रचंड कामं त्यांची आहेत। मध्यवस्तीचा हा प्रचंड मोठा वाढ जो आहे त्यांना इथून भरघोस मतांनी नक्की 100% सहकार्य करणार आहे। आपण नगराध्यक्ष पदासाठी निश्चितच तरुण तडफदार जे लोक काम करतात अशा लोकांना साथ दिली पाहिजे। त्यांना या 3 नगरसेवक पदाच्या उमेदवाराची भक्कम साथ लाभणार आहे व शिवसेनेच्या या लक्ष्मीताई कलोसे पवार या निश्चितच विजयी होतील असे मला आशा आहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 7 के उम्मीदवारों की इस प्रचार यात्रा में पालक मंत्री संजय राठौड़ के और प्रभाग उम्मीदवारों के समर्थन में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिससे प्रभाग परिसर गूंज उठा था। चुनाव प्रचार के लिहाज से यह प्रचार यात्रा अद्भुत और दमदार रही, जिसमें उम्मीदवारों के साथ ही उनके समर्थकों का प्रचंड उत्साह देखते ही बन रहा था। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।